श्रीमन्नारायणीयं दशकं 32 पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽध्यद काण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखाद् धृतेषु वेदेष्वदित्स किल मत्स्यरूपं सत्यव्रतस्य द्रमिलादिभर्तुर्नति जले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिता कृतिस्त्वम् अतृष्यता कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येऽम्बुभात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोबि कलसीञ्चकूपं वापीं सरच्चान शिशे विभो त्वं योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्प दिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन् नयासि प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिणी उद्घूर्णमान शरणं ययौ त्वां धरां त्वदा देशकरीमवाप्तां नौरूपिणी मारुरुपुस्तथा ते तत्कम्बकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां तदा नमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणीं बबन्तुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारी कल्पावधौ सप्त मुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रत भूमिपं तं वैवस्वतार्क्यं मनुमादधानः क्रोधादयग्रीवमभिद्रुधो भू स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे दधानः प्रभञ्जनागार हते प्रपायाः श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्करै भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।